हेलो गाइज, तो आज का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बाहर का स्टेट का भी है एंड तो मैं मेंशन नहीं क्या कौन सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेडिकल एग्जाम में ज़्यादातर मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्रेंज एनाटॉमी इज़ फाउंड इन लिप्स ऑफ। तो क्रेंज एनाटॉमी जो है ये C4 प्लांट्स में पाया जाता है, C4 प्लांट्स का लिप्स में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Cranch anatomy is found in C4 plants. Next question is, where does the light reaction takes place? Where does the light reaction takes place? Grana, stroma, cytoplasm, endoplasmic reticulum. So option A is correct. Grana. Light reaction takes place in grana. Light reaction of photosynthesis takes place in grana. The question is, the metallic ion found in the chlorophyll is iron, magnesium, zinc, cobalt. Option B is correct, magnesium. Metallic ion found in the chlorophyll is magnesium. तो क्लोरोफिल जो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल। जैसे हम लोग का ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, तो जो प्लांट का जो लिप्स में होता है ग्रीन कलर के लिए उसमें होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Engelmann observed that 1822 observed that motile aerobic bacteria accumulated near areas of a filament of Spirogyra, so which were illuminated by red or blue light, but they did not accumulate green light near the areas illuminated by. From these, we inferred that chlorophyll absorbs green light. O2 is released from CO2 in the light reaction. O2 is released from H2O in the light reaction. Option D, red and blue light are more effective in photosynthesis. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, रेड एंड ब्लू लाइट आर मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। Engelmann and observed that motile aerobic bacteria accumulated near the areas of a filament of Spirogyra, so which were illuminated by red or blue light, but they did not accumulate green light near the areas illuminated by. From this we inferred that option D is correct. इसके लिए red and blue light are more effective in photosynthesis. Next question is, which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plants? C4 plants जो cranch anatomy has C2. Which is the first CO2 acceptor enzyme in C4 plants? Cranch plants तो ऑप्शन दिया हुआ है RuBP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोरिक एसिड, RuBCO एंड PEP कार्बोक्सिलेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, PEP कार्बोक्सिलेज। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन C4 प्लांट्स क्रैंच प्लांट्स इज PEP कार्बोक्सिलेज। PEP का मतलब होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, PHOS फॉस्फोइनोल पायरोवेट, पायरोवेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cranch anatomy is found in, cranch anatomy is round in, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में मिला है, लिप्स ऑफ C4 प्लांट्स। cranch anatomy is round in lips of C4 plants. Next question is, O2 in oxygen in photosynthesis is released from. O2 is photosynthesis is released from O2 molecule, H2O molecule, chlorophyll, carbohydrates. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। O2 in photosynthesis is released from H2O molecule. तो during photosynthesis oxygen is released from water molecules through photolysis. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनिन मीन्स एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो बोला है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इज
1 पार्ट ऑफ RNA, 1 पार्ट ऑफ DNA, 1 एंजाइम, 1 कोएंजाइम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। NADP is 1 coenzyme. Next question is a plant that needs not less than 10 hours. A plant that needs not less than 10 hours of light of to flower is. अच्छा, a plant that needs not less than 10 hours of light of to flower is. लॉन्ग डे प्लांट। अच्छा, ये दिया हुआ बोला है कौन सा है? ये लॉन्ग डे प्लांट है ना, शॉर्ट डे प्लांट है ना, न्यूट्रल डे न्यूट्रल प्लांट है ना, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए प्लांट दैट नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉन्ग डे प्लांट, इसको लॉन्ग डे प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन केल्विन साइकिल? ग्लूकोज, ADP, NADP, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन केल्विन साइकिल? तो ये सब केल्विन साइकिल में सिंथेसाइज करता है, तो ग्लूकोज, ADP, NADP। तो क्वेश्चन इज P700 इज द रिसाइटोन सेंटर ऑफ, तो रिएक्शन सेंटर होगा शायद। P700 इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो P700 के लिए है P700 इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 फोटोसिस्टम 1, एंड PS2 जो है ये P680 इज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2। तो ये दोनों याद करिएगा आप लोग, P700, PS1 एंड P680 फोटोसिस्टम 2। अब तो इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोटोपियोड रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स is perceived by the photoperiod response of the plants is perceived by the floral buds, leaves, flowers, meristems. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, leaves. Photoperiod response of the plants is perceived by the leaves. तो leaves जो है ये लेंथ को डिटेक्ट करता है डे नाइट में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is RU B.Sc is the most abundant enzyme in the world because, तो ये most abundant enzyme, तो ये एक एंजाइम है most abundant enzyme in the world because, तो इसका कारण दिया हुआ है it is required by the green plants for photosynthesis. It can absorb maximum carbon dioxide during photosynthesis. Its active site can bind with both CO2 and O2 and is found in leaves. Option D दिया हुआ है it can release oxygen from all the plants in the world. तो इसका जो कारण है ऑप्शन सी इज करेक्ट। Rubisco is the most abundant enzyme in the world because its active site can bind with both CO2 and O2, carbon dioxide and oxygen, and is found in leaves. Option D is correct. इसलिए है Rubisco is the most abundant enzyme in the world. Option C is correct. So next question is ATP synthesis. ATP synthesis in mitochondria takes place in. ATP synthesis in mitochondria takes place. Adenosine triphosphate synthesis in mitochondria takes place in matrix, inner membrane, outer membrane, both A and C. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनर मेम्ब्रेन। ATP synthesis in mitochondria takes place in inner membrane. Next question is for short day plants the critical period is light, dark, evening, morning. Option B is correct, dark. For short day plants the critical period is dark. Next question is PFR and PR conversion is caused by. तो PFR means phytochrome fat red, phytochrome far red, and PR means phytochrome red. Phytochrome far red and PR means phytochrome red. Conversion is caused by blue light, red light, far red light, and all of the above. Option D is correct, all of the above. Phytochrome far red to phytochrome red conversion is caused by blue light, red light, far red light. Option तीनों correct है.
Next question is the role of light in plants. The role of light in plants is that it controls. The role of light in plants is that it controls photosynthesis, distribution of hormones, movements, all of the above. Option D is correct, all of the above. So rule of light in plants control the photosynthesis, distribution of hormones and movements. तीनों को control करता है, तो तीनों correct है, all of the above. Next question is which one is the precursor of chlorophyll? Which one is the precursor of chlorophyll? कौन सा precursor of chlorophyll है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडियन, ट्रिप्टोफान, क्लोरोफाइलाइड. ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोरोफाइलाइड. So chlorophyll, one of the precursor of chlorophyll is chlorophyllite. Option D is correct. Next question is for photosynthesis. For synthesis of one glucose molecule, the number of ATP required are. For synthesis of one glucose molecule, the number of ATP required are 9 ATP for C3 cycle, 20 ATP for C4 cycle, 18 ATP for C3 cycle, 30 ATP for C4 cycle. Option D, C, 22 ATP for C3 cycle, 35 ATP for C4 cycle, and option D दिया हुआ है 24 ATP for C3 cycle and 36 ATP for C4 cycle. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 18 ATP for Kelvin cycle, C3 means Kelvin cycle, and 30 ATP for Kranz, C4 Kranz cycle, Kelvin Kranz. So for synthesis of one glucose molecule, the number of ATP required are 18 ATP for Kelvin cycle and 30 ATP for C3 cycle. Option B is correct. Next question is a pigment which absorbs red and far red light is. A pigment which absorbs red and far red light is phytochrome, carotene, cytochrome, and xanthophyll. Option A is correct, phytochrome. A pigment which absorbs red and far red light is. तो ये पहले एक मिला था शायद PFR करके, PFR and PR करके, तो इसमें सब एब्जॉर्ब होता है. The pigment which absorbs red light, PFR the phytochrome far red and phytochrome red करके मिला था. तो a pigment which absorbs red and far red light is, option A is correct, phytochrome. Next question is for each molecule of glucose formed in plants, the number of molecule of ATP and NADPH2 required are respectively. तो बोला है for each molecule of glucose formed in plants, the number of molecule of ATP and NADP required respectively. कितना ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोलिकुल ATP कितना रिक्वायर्ड होगा? तो ऑप्शन इज 12 18 18 12 15 10 एंड डी 322. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 ATP and 12 NADPH2. Next question is the organism in Krebs cycle does not occur in mitochondria is. The organism in which Krebs cycle does not occur in mitochondria is yeast, E. coli, Ulothrix, mold. Option B is correct, E. coli. In organism in which Krebs cycle does not occur in mitochondria, E. coli. Next question is of about 30 different enzymes isolated from plasma membrane, which one occurs in more quantity? तो क्वेश्चन बोलने वाला है ऑफ अबाउट 30 डिफरेंट एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 30 तरह की एंजाइम को आइसोलेट किया गया है. तो व्हिच वन ऑकर्स इन मोर क्वांटिटी? ATPase, alkaline phosphate acid, phosphor monoesterate and RNase. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ATPase जो है ये हायर क्वांटिटीज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपेयर टू अदर एंजाइम. तो ऑप्शन ATP इज करेक्ट, ATPase. Next question is light phase of photosynthesis takes place inside the stroma, thylakoid and mitochondria mesophyll. So option B is correct, thylakoid. Light phase of photosynthesis takes place inside the thylakoid.
thylakoid membranes within the chloroplast. So night phase of photosynthesis takes place inside the thylakoid membranes within the chloroplast. Question is, which of the component of photosynthetic होगा शायद, which of the component of photosynthetic electron transport is directly involved in the transport of protons from stroma to lumen of thylakoid membrane. तो ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोइन, ferredoxin and pheophytin. Option B is correct, plastoquinone. Which of the component of photosynthetic electron transport is directly involved in the transport of protons from stroma to lumen of thylakoid? Plastoquinone. Next question is, the pigment that protects the plant from damage. Pigment that protects the plant from damage by UV radiation is, ultraviolet radiation is, chlorophyll, xanthophyll, phycocyanin and carotenoids. Option D is correct, carotenoids. The pigment that protects the plant from damage. तो कौन सा पिगमेंट जो प्लांट का जो डैमेज होता है यूवी रेडिएशन से उससे बचाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैरोटीनॉइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NADPH2 is generated through anaerobic respiration, glycolysis, photosystem 1 and photosystem 2. Option C is correct. NADPH2 is generated through PS1, photosystem 1. Next question is, the photon energy from sun to chlorophyll. Photon energy from sun to chlorophyll A is transferred as follows. Photo energy from sun to chlorophyll A is transferred as follows. Option दिया हुआ है carotenoids, phycoerythrin, chlorophyll A, carotenoids, chlorophyll B, chlorophyll A, and option C, phycoerythrin, carotenoids, chlorophyll A, chlorophyll B, phycoerythrin, chlorophyll A. तो option B is correct, carotenoids, chlorophyll B and chlorophyll A. 28 का है B, carotenoids, chlorophyll B, chlorophyll A. Next question is, Emerson effect. Emerson effect explains the phenomenon of transpiration, absorption of water by roots, photosynthesis, respiration. Option C is correct, photosynthesis. Emerson effect explains the phenomenon of photosynthesis. So question 29 is Emerson. Emerson effect explains the phenomenon of photosynthesis. Next question is, in ETS at terminal oxidation. In ETS at terminal oxidation, the cytochrome which donates electron to H positive and also catalyzes the addition of oxygen is cytochrome B, C, A3. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइटोक्रोम A3. साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू हाइड्रोजन आयंस. साइटोक्रोम A3, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, C4 cycle. C4 cycle is also called EMP cycle, TCA cycle, H and SLAC pathway and pentose phosphate pathway. Option C is correct, TCA cycle. C4 cycle. No, option C is correct. C4 cycle is also called H and SLAC pathway. Option C is correct. Next question is, in which is yellow green pigment found? In which नीचे दिया हुआ है कौन सा में येलो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है? ज़ैंथोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ज़ैंथोफाइटा. इन व्हिच इज येलो ग्रीन पिगमेंट फाउंड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ज़ैंथोफाइटा. येलो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है ज़ैंथोफाइटा में. एंड इट ऑल्सो कंटेन, ये और भी पिगमेंट कंटेन करता है लाइक क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स को भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइबोलेज बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम.
Ribulase biophosphate carboxylase enzyme catalyzes the reaction. ये पहले भी मिला है ये एंजाइम रूबिस्को RUBISCO2 रूबिस्को भी बोल सकते हैं। तो राइबुलेज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन। ऑप्शन ए दिया हुआ है बिटवीन ऑक्सालो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम। ऑप्शन बी बिटवीन CO2 एंड राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ऑप्शन सी बिटवीन राइबुलेज बाइफॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ऑप्शन डी बिटवीन NO2 एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Ribulase Rubisco enzyme catalyzes the reaction between CO2 and ribulase 1,5 biphosphate. Next question is, where does the light reaction takes place? Where does the light reaction take place in photosynthesis? तो इसमें तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। तो where does the light reaction takes place in photosynthesis? Option A is correct, thylakoid membrane in of the chloroplast. Next question is, how many Kelvin cycles will it take to make one molecule of hexose sugar 2648? Option B is correct, 6. How many Kelvin cycle will it take to make one molecule of hexose sugar? Option B is correct, 6. हेक्सोस सुगर का जो फॉर्मूला होता है C6H12 और 6. How many Kelvin cycles will it take to make one molecule of hexose sugar? Option 6. Option B is correct. Next question is, in C3 cycle, CO2 acceptor is PEP, RUBP, OAA and malic acid. Option B is correct. Option B is correct. Ribulase biphosphate 1,5 biphosphate. Option B is correct. In C3 cycle, the CO2 acceptor is RUBP. Is correct. Next question is, what is the required for the synthesis of ATP in mitochondria? What is the required for the synthesis of ATP in mitochondria? NADP, FMN, oxygen, pyruvic acid and oxygen. Option C is correct, oxygen. Oxygen is required for the synthesis of ATP in mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट एंड एनिमल सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट सेल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट जो सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं मिलता है सब। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following enzymes helps in CO2 stabilization in the C4 cycle? Which of the following enzymes helps in CO2 stabilization in the C4 cycle? तो ऑप्शन दिया हुआ है RUDP carboxylase and PEP carboxylase, RUDP oxygenase and PGA. Option B is correct, PEP carboxylase. Phosphoenol pyruvate carboxylase. Which of the following enzymes helps in CO2 stabilization in the C4 cycle? Option B is correct, phosphoenol pyruvate carboxylase. Option B is correct. Next question is, what is the nature of stomata in CAM plants? What is the nature of stomata in CA plants? They are open at night and close during the day. नेचर बोला है, नेचर ऑफ स्टोमेटा इज CAM प्लांट्स में। तो ऑप्शन ए इज दे ओपन एट नाइट क्लोज ड्यूरिंग द डे, दे नेवर ओपन, दे ऑलवेज, तो ये तो नहीं होगा शायद, नेवर ओपन, दे ऑलवेज रिमेन ओपन, तो ये भी ऑलवेज रिमेन ओपन भी नहीं रहेगा, नेवर ओपन भी नहीं, ओपन तो नहीं होगा, ये तो भी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज दे ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, ये दोनों में से कोई एक होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये फोटोसिस्टम 2 के साथ रिलेटेड है। फोटोसिस्टम 2, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर occurs in photosystem 2. Next question is, which of the following is not an electron transferring molecule? कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मोलिक्यूल नहीं है
FES protein, chlorine enzyme, ATP, none of the above. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ATP जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल नहीं है, ये ATP प्राइमरली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोल सकते हैं। ATP इज प्राइमरीली एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, ये स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी विद इन द सेल, सेल के अंदर, विद इन सेल और सेल के अंदर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन बोल सकते हो। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस शुगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस शुगर, वाटर, सनलाइट, CO2, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Green plants, which of the following used by green plants to produce sugar, option D is correct. Used to produce sugar, water, sunlight, CO2, सबको यूज़ करके ये वाटर, सनलाइट, CO2 सबको यूज़ करके ये ग्रीन प्लांट्स शुगर को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम cyclic photophosphorylation is sugar, NADPH and H positive, ATP and NADPH2, option D ATP, option D is correct. The total energy obtained from cyclic photophosphorylation is ATP. Total energy obtained from cyclic photophosphorylation is only ATP, option A adenosine triphosphate. Next question is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is the first stable product. Light reaction, non-photosensitive reaction, C4 cycle, C3 cycle. Option C is correct. Oxaloacetic acid is the first stable product of C4 cycle. C4 cycle को भी पहले भी मिला है एक H and HATC, H and स्लैक पाथवे बोला जाता है C4 साइकिल को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस occurs in the stroma, in the thylakoid, mitochondria, mesophyll। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन द thylakoid membranes of chloroplast। Light stage of photosynthesis occurs in the thylakoid membranes of chloroplast। 47. Choose the cycle which is universal to all plant। सब प्लांट के लिए यूनिवर्सल है, पाया जाता है बोल सकते हो। तो CAM साइकिल, C4 साइकिल, C3 साइकिल, बोथ C3 एंड CAM। तो ऑप्शन C3 साइकिल जो केल्विन साइकिल है ये सब प्लांट में पाया जाता है, सब प्लांट में सर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In the process of photosynthesis, which of the following elements is essentially used in synthesis of proteins and compounds? तो ऑप्शन दिया हुआ है आयोडीन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रोजन। तो एमिनो एसिड को बोला है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कंपाउंड्स। प्रोटीन को करता है सिंथेसिस करता है तो नाइट्रोजन को यूज़ करके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NADPH इज प्रोड्यूस्ड थ्रू PS1 and PS2 aerobic respiration glycolysis। ऑप्शन ए इज करेक्ट, NADPH is produced through photosystem 1 or PS1। Next question is what is the first product of CO2 fixation, carbon dioxide fixation in C4 cycle? Oxalic acid, 3-phosphoglyceric acid, glyceric acid, ribulose 1,5-biphosphate and phosphoenol pyruvate। Option A is correct। What is the first product of CO2 fixation in C4 cycle is oxalic acid, OAA, oxalic acid fixation।
Next question is, in C4 pathway initial carbon dioxide fixation occur in chloroplast of C4 pathway में initial carbon dioxide fixation occurs in chloroplast of guard cell, mesophyll, bundle sheath, all of the above. Option B is correct, mesophyll. In C4 pathway, initial carbon dioxide fixation occurs in chloroplast of mesophyll. Option B is correct. Next question is, in succulent plants, CM plants, which of the following is the reason that causes opening of stomata during night time? Causes opening of stomata night time. ऑप्शन दिया हुआ है, accumulated organic acid breakdown rapidly releasing excess amount of carbon dioxide. Option B, incomplete oxidation of carbohydrate in respiration and accumulation of organic acid. Option C, chlorophyll, low chlorophyll content. Option D, low water content. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन सकुलेंट CM प्लांट्स कुछ ऑफ द फॉलोइंग रीजन बोला है, कौन सा रीजन होगा जो ड्यूरिंग नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Incomplete oxidation of carbohydrate in respiration and accumulation of organic acid. Option B is correct. Next question is, in which state photochemical reaction by excited form of chlorophyll A takes place? In which state photochemical reaction by excited form of chlorophyll A takes place? Ground state, first singlet state, second singlet state, and metastable triplet state. Option D is correct, metastable triplet state. In which state, कौन सा स्टेट में metastable triplet state में photochemical reaction by excited form of chlorophyll A takes place? Oxygen evolved during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में, कम्स फ्रॉम वाटर मोल्स. तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व दिस रिएक्शन? कौन सा एलिमेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है? तो मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोरीन दिया हुआ है, तो ये मैंगानीज होगा. इससे तो कोई एलिमेंट नहीं है. मैंगानीज एंड क्लोरीन, मैंगानीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम. ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैंगानीज एंड क्लोरीन. मैंगानीज ऐसे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैंगानीज ही होगा, मैंगानीज एंड क्लोरीन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, chromatophores take part in respiration, photosynthesis, growth, movement. Option B is correct. Chromatophore take part in photosynthesis. Next question is, which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? ऑप्शन दिया हुआ है, NADPH, NADH, ATP, CO2. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, NADH. In which of the following is not a product of light reaction in photosynthesis? Is not बोला है, not a product of light reaction in photosynthesis. Option B is correct, NADH. Next question is, which one is a CAM plant? Which one is a CAM plant? Maize, pineapple, onion, pea. Option B is correct, pineapple. Pineapple is a CAM plant. Next question is, what is the empirical formula of chlorophyll B? Chlorophyll B का empirical formula पूछा है, कौन सा empirical formula होगा? तो empirical formula of chlorophyll B is C35 H70 O6 N4 Mg. C35 H70 O6 N4 Mg. Option A is correct. Next question is, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन, मेंडल, ब्लैकमैन्स, बेटसन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ब्लैकमैन्स ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट का एग्जाम्पल पूछा है, रेडिश, पी प्लांट, मेज. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट इज मेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
in which process NADP is converted into NADPH2, glycolysis, Krebs cycle, photosynthesis, protein synthesis, photosynthesis. तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट. इन हुच प्रोसेस NADP इज कन्वर्टेड इनटू NADP से NADPH2 हो जाता है. कौन सा प्रोसेस में? ऑप्शन डी इज करेक्ट, फोटोसिंथेसिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज P700 in the light harvesting complex during photosynthesis. तो P700 in the light harvesting complex during photosynthesis, option A is another name of chlorophyll A and found in PS1 is another name of chlorophyll B and found in PS1 chlorophyll B. अच्छा, chlorophyll A and chlorophyll B and is another name of chlorophyll A दिया हुआ है and photosystem 2 chlorophyll B and photosystem 2. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा. P700 जो है फोटोसिस्टम 1 में होता है, फोटोसिस्टम 1 में होता है. तो ऑप्शन एंड P658 है, P678 ये फोटोसिस्टम 2 में होता है. तो P700 ये तो ये दोनों नहीं होगा. P700 फोटोसिस्टम 1 में होता है, तो ये दोनों में से कोई एक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इन अनदर नेम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड फाउंड इन फोटोसिस्टम 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन. ये फर्स्ट क्वेश्चन में मिला था ये क्वेश्चन. क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, CAM प्लांट्स, ऑल ऑफ द अबव. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट, C4 प्लांट्स. द fixation of CO2 to malate and its decarboxylation are common to both C4 and CAM plants, but in CAM plants events are separated spatially are separated temporally, require high light intensity. Option D require high CO2 concentration. तो बोला है the fixation of CO2 to malate and its decarboxylation are common to both C4 and CAM plants, but in common plants events, option B is correct, are separated temporally. What is the primary acceptor of CO2 in H-slug cycle? C4 cycle को बोला जाता है. तो phosphoenol pyruvic acid, ribulose, biphosphate and phosphoglyceric acid. Option D diphosphoglyceric acid. Option A is correct. What is the primary acceptor of CO2 in H-slug cycle? Option A is correct, phosphoenol pyruvic acid. Next question is evolution of C4 photosynthetic system. Evolution of C4 photosynthetic system is one of the strategies for maximizing water loss as well as availability of CO2, minimizing availability of CO2 while maximizing water loss, as well as availability of CO2, and option D maximizing availability of CO2 while minimizing water loss. So option D is correct. Evolution of C4 photosynthetic system is one of the strategies for, option D is correct, maximizing availability of CO2 while minimizing water loss. Next question is first stable product of CO2 fixation in C3 plants. First stable product of CO2 fixation in C3 plants is option A glucose, PGAL starch. तो ऑप्शन B is correct, PGA का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन केल्विन प्लांट्स इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज pyruvate dehydrogenase complex needed for the conversion of pyruvic acid to acetyl CoA is located in intermembrane space of mitochondria and matrix of mitochondria, cytoplasm, D grana of chloroplast. Option B is correct. Pyruvate dehydrogenase complex needed for the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A is located in matrix of mitochondria.
Next question is, the CO2 acceptor, carbon dioxide acceptor molecule in C4 cycle is PGA, PGAL, PEP, RUBP. ऑप्शन सी इज करेक्ट, PEP. PEP पहले भी बोला है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट. CO2 acceptor molecule in C4 cycle is PEP. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो C4 साइकिल PEP जो है फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the primary CO2 fixation product of C3 plants? Which is the primary CO2 fixation product of C3 plants? ऑप्शन दिया हुआ है PGA, PEP, OAA and RUBP. ऑप्शन ए इज करेक्ट, PGA. Phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, which is the primary CO2 fixation product of C3 plants. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3-phosphoglycerate. तो C3 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है PGA में ड्यूरिंग C3 प्लांट्स ऑफ केल्विन साइकिल, ड्यूरिंग केल्विन साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the primary carbon dioxide acceptor in C3 plants? ऑप्शन दिया हुआ है राइबोलेज बाइफॉस्फेट, PGA, 3-phosphoglycerate and PEP, phosphoenol pyruvate and oxalic acid. ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइबोलेज बाइफॉस्फेट. C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 1? फोटोसिस्टम 1 तो बोला है पहले 700 एंड फोटोसिस्टम 2 इज 680. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? ATP, NADP, NADH, NADPH, oxygen. ऑप्शन बी इज करेक्ट, NADH. ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पहले भी एक बार मिला शायद. तो NADH not a product of light reaction of photosynthesis. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which light range is most effective in photosynthesis? Which light range is most effective in photosynthesis? Blue, green, red, violet. Option C is correct. तो photosynthesis में light range is most effective in photosynthesis. तो photosynthesis में most effective is red, but blue and red दोनों इफेक्टिव है, बट मोस्ट इफेक्टिव इज रेड. ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा. ब्लू रेड दोनों होता है लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट? व्हीट, रेडिश, सोयाबीन, टोमेटो. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोयाबीन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट डे प्लांट? सोयाबीन इज ए शॉर्ट डे प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट. द साइट ऑफ perception of light in plants during photoperiodism is shoot, apex, stem, axillary bud, leaf. Option D is correct. The site of perception of light in plants during photoperiodism is leaf. Next question is, what is the site of perception of photoperiod? What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering plants in induction of flowering in plants? तो लीव्स होगा. पहले क्या मिला है? पहले मिला है लीफ एंड बाद में लीव्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैटेगराइजेशन एज शॉर्ट डे प्लांट्स इज बेस्ड ऑन. कैटेगराइजेशन एज शॉर्ट डे प्लांट्स इज बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोरेस्पिरेशन. ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोटोपीरियोडिज्म. Categorization as short day plants is based on photoperiodism. Next question is, the pigment that regulate flowering in plants is. Pigment that regulate flowering in plants is carotenoids, chlorophyll, phytochrome, pheoplast. So option C is correct, phytochrome. Pigment that regulate flowering in plants is phytochrome. Option C is correct. Next question. तो और तो नहीं है,
तो ये टोटल 79 क्वेश्चन था। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड आप लोग अगर देखें तो 2x लगा के या 1.5x लगा के देखें वीडियो को। ये पहले बोलना चाहिए था, सॉरी फॉर लेट, लास्ट में बोल रहा है मैं ये सब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।